Good morning to all. Let us start the chapter Active Voice and Passive Voice from the book Oxford Current English Grammar. Exercise number 55. Last class I have completed from number 1 तक 20 तक हो गया था हम लोग, and today we are going to start number 21. 20 तक हो गया था. देखो 21 क्या दिया? I am learning it. I am learning it. ये कौन सा टेंस में है? I am learning it मतलब I सब्जेक्ट, I am learning present continuous, it is the object. देखो कैसे होता है, how to solve. Number 21. I am learning present continuous में है I सब्जेक्ट, I am learning it. Active, it means object, this is verb. पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा. It is being, as it is continuous tense, it is being learnt, L-E-A-R-N-T. It is being learnt, past participle verb का by me. वेरी गुड. ये हो गया हमारा पैसिव. नेक्स्ट देखो नंबर 22 में दिया क्या? देखो he has eaten a mango. He has eaten means perfect tense, present perfect. He subject, has eaten verb, present perfect tense में है. He has eaten a mango. It's active voice. A mango is the object. इसे जो पैसिव करेंगे मैंगो सामने आ जाएगा. A mango is been. Whenever it is given present perfect or past perfect, you have to write the word been. A mango is been eaten, past participle. A mango is been eaten by, he का जगह क्या लिखेंगे? by him. I hope you are able to understand. Number 23 में दिया I have killed 2 birds. I have killed how many birds? 2 birds. देखो 2 birds ऑब्जेक्ट हो गया. have killed present perfect, I सब्जेक्ट. अब इसको चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा 2 birds, प्लूरल है. 2 birds have been killed by, आई के जगह क्या लिखेंगे? by me. ऐसे 23 हम लोग को कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट देखो नंबर 24 में देखा she has helped me. she has helped, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट. she has helped me, ये एक्टिव है. she सब्जेक्ट है, has helped वर्ब है, अब me ऑब्जेक्ट है. क्या होगा इसका आंसर? me मतलब आई के पास क्या लगता है? I have been helped by, सी का जगह क्या लिखेंगे? by her. सी ऑब्जेक्ट मतलब her हो जाएगा. दिस इज पैसिव फॉर्म. नेक्स्ट नंबर 25 में लिखा है देखो I have done the work. ये एक्टिव है. आई सब्जेक्ट है, have done प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब, the work ऑब्जेक्ट. therefore क्या होगा आंसर? the work has been done. has यानी सिंगुलर नंबर. the work has been done by whom? by me. ये हो गया पैसिव. नंबर 26 नंबर पे क्या दिया देखो they have caught the trees. they have caught the trees. एक्टिव है. they सब्जेक्ट, have caught past perfect, प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब है, the trees ऑब्जेक्ट. आंसर क्या होगा? the trees have been
have been caught by them. Next 27 देखो क्या लिखा है 27 they have seen the ghost. they have seen the ghost. एक्टिव फॉर्म है दे सब्जेक्ट है have seen verb the ghost ऑब्जेक्ट. आंसर क्या होगा the ghost has been seen. As it is given present perfect, you have to write been. The ghost has been seen by them. This is the basic English grammar, just normal form. Subject plus verb plus object given, you have to write in this form. 27 again, let's go next 28. देखो 28 नंबर में दिया देखो it is given he has sold his car. He subject first write he has sold his car. Active form he subject has sold present perfect his car object. Therefore क्या होगा आंसर his car has been sold by him. ये हो गया हमारा पैसिव फॉर्म. नंबर 29 क्वेश्चन दिया है देखो she has taught us. She has taught us. Active form she subject has taught present perfect verb us object. तो इसको चेंज करेंगे us मतलब we have के पास verb क्या लगता है we have been taught by whom? by her. सी का जगह में क्या लिखे by her. नेक्स्ट नंबर 30 वेरी फास्ट कंप्लीट करो. नंबर 30 you have made several mistakes. You have made several mistakes. You सब्जेक्ट है have made verb several mistakes हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट. एक्टिव फॉर्म है इसका आंसर लिखे क्या होगा several mistakes. Therefore several mistakes have been made by you. यही हो गया पैसिव फॉर्म. नेक्स्ट नंबर 31 आज 40 तक कंप्लीट करेगा. 31 देखो क्या लिखा है द पुलिस हैव कॉट द thief. The police have caught the thief. Okay. The police सब्जेक्ट हो गया have caught verb the thief ऑब्जेक्ट. एक्टिव फॉर्म है तो इसका आंसर क्या होगा the thief has been caught. The thief has been caught by whom? by the police. 31 complete. नेक्स्ट 32 देखो क्या लिखा है 32 में she has cheated me. she has cheated me. एक्टिव फॉर्म she सब्जेक्ट है cheated पास्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनाइट verb me the ऑब्जेक्ट. क्या होगा आंसर therefore I was cheated by her. ये हो गया पैसिव फॉर्म. नेक्स्ट नंबर 33 में दिया है we have helped you.
এটা एक्टिव फॉर्म, वी सब्जेक्ट है, हैव हेल्प वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। क्या होगा आंसर? देयरफॉर वी हैव हेल्प्ड यू, यू सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इधर, यू हैव बीन हेल्प्ड, यू हैव बीन हेल्प्ड बाय अस, ये हो गया पैसिव फॉर्म। नंबर 34 देखो क्या दिया है। नंबर 34, someone has broken the glass, someone has broken the glass, एक्टिव फॉर्म है, someone इज द सब्जेक्ट, कोई किसी मेंशन है, जस्ट someone, has broken प्रेजेंट परफेक्ट, the glass is the object, therefore the glass has been broken, the glass has been broken by someone, active। okay, 34 से कंप्लीट। लेट अस गो नेक्स्ट नंबर 35। देखो नेक्स्ट नंबर 35, दिस बॉय हैज मेड इट, इसको चेंज करें क्या होगा? देखो पहले 35 को लिखो, फिर लिखा दिस बॉय हैज मेड इट, तो इसको सब्जेक्ट कौन है? दिस बॉय इज द सब्जेक्ट, हैज मेड वर्ब, इट इज द ऑब्जेक्ट, एक्टिव फॉर्म। इसको चेंज करें कैसे? देयरफॉर इट हैज बीन परफेक्ट टेंस है, इट हैज बीन मेड बाय दिस बॉय, ये हो गया तुम्हारा पैसिव। नंबर 36 को देखते हैं, शी इज ड्राइंग ए पिक्चर, शी इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, शी इज ड्राइंग ए पिक्चर, एक्टिव फॉर्म है, शी इज द सब्जेक्ट, इज ड्राइंग वर्ब, ए पिक्चर इज द ऑब्जेक्ट, जस्ट मैथमेटिकल वे यू हैव टू राइट। देयरफॉर ए पिक्चर इज बीइंग, क्यों लग रहा है इज बीइंग? कंटिन्यूअस टेंस है, द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन, बाय हर, पैसिव हो गया। नेक्स्ट 37 देखो, 37 में क्या दिया है? शी ऑलवेज अब्यूजेस मी, दैट मीन्स शी ऑलवेज अब्यूजेस मी, एक्टिव फॉर्म है, शी सब्जेक्ट है, अब्यूजेस वर्ब, मी इज द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स देयरफॉर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, आई एम अब्यूज्ड, by her always, okay, although you can write I am abused always by her, this always word you can write here also, I am abused always by her। next 38 में देखो दो बाकी है। 38, he recites the poem, he recites present indefinite, he recites the poem, therefore आंसर क्या होगा? the poems are प्लूरल फॉर्म में दिया है, the poems are recited by her, by him, he the subject, therefore by him, the poems are recited by him। number 39, I follow the rules,
I follow the rule. I follow the rule. एक्टिव फॉर्म है. Which is the subject? First you have to identify. I is the subject है. Follow verb. What? I follow the rule means object. Therefore, the rule is followed. The rule is rules लिखा है plural form. Therefore, the rules are. When you give plural, you write the rules are followed. Past participle verb का. Followed by. The rules are followed by me because I follow the rules. Last number 40. 40 number दिया. They help the poor. They help the poor. Which is the subject? They is the subject. They subject. Help verb. The poor is the object. Subject plus verb plus object form में दिया है. The poor is helped. The poor is helped. The poor is helped by whom? By them. By them. This is passive form. In this are 40 question active passive form. I have already completed up to 40. Next remaining from 41 to 60. Next I will do. Okay. Try to practice this. Thank you for today class. Next I will do more.